my channel. So today's video is gonna be very exciting because today I'm gonna be reviewing TS Cosmetics glitter. So basically TS Cosmetics एक Instagram store है. They also have a website और उनके पास बहुत amazing glitters हैं and बहुत amazing liquid highlighters हैं, pigments हैं, eyelashes. There are many things to choose from. So this video is not sponsored by TS Cosmetics. So this video is gonna be in 3 parts. पहले I'm gonna review their glitters. सेकेंड थिंग इज कि मैं आपको स्वॉचेस दिखाऊंगी. आई हैव 10 शेड्स. एंड थर्ड मैं आपको एक आई मेकअप आई लुक करके दिखाऊंगी कि आप वो ग्लिटर्स को यूज करके कैसे एक आई लुक क्रिएट कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ टीएस कॉस्मेटिक्स इंस्टाग्राम स्टोर का नाम है एंड दे ऑल्सो हैव अ वेबसाइट. तो आप चाहे तो स्टोर से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, चाहे तो उनकी वेबसाइट से भी कर सकते हो. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मेक श्योर टू चेक दैट आउट. So basically these glitters are very अफोर्डेबल. They also have liquid highlighters. They also have eyelashes, pigments, many things, lip butters. Their products are very nice, very amazing. One thing I would like to mention is that this video is not sponsored by them, but I really like their products, so I'm gonna rave a little bit. So first things first, this is how they have sent me their products and everything is inside और बहुत ही अच्छे से बबल रैप होके सिक्योरली वो पैकेज मेरे घर पे आया था. So they also give this thank you card जो कि बहुत ही क्यूट है, जो और उल्टा भी है. So basically ग्लिटर्स कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, बट आई डोंट हैव दैट राइट नाउ. मैं पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी जो पैकेजिंग में वो आते हैं. So this is how the actual product looks like. Packaging is very nice, very luxe. It looks very luxe for sure, and you just screw it open and stuff like that. तो यहाँ पे ये इस टाइप से दिखता है एंड पीछे इनका नाम लिखा हुआ है. दिस इज द शेड पीच फिज. सच अ प्रिटी कलर. एंड द गुड थिंग अबाउट दीज ग्लिटर्स इज कि आपको एक अलग से ग्लिटर ग्लू नहीं लेनी है. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन साइड इट. सब कुछ अंदर ही मिक्सचर सब कुछ बना हुआ है. आपको जस्ट लेना है, लगा लेना है, दैट्स इट. कुछ भी आपको ग्लू की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप लूज पिगमेंट ले रहे हो, लूज ग्लिटर ले रहे हो, आपको अलग से ग्लू लेनी पड़ रही है, ग्लिटर लेनी पड़ रही है, पहले ग्लू लगाओ, ये करो, बहुत ज्यादा सप्पा हो जाता है सच्ची में. तो इसमें क्या करना है, जस्ट लेना है, दैट्स इट. यू आर गुड टू गो. जस्ट फॉर $300, वेरी अफोर्डेबल आई वुड से, क्योंकि क्वांटिटी बहुत सारी है. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि मैंने टीएस कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट 2-3 इयर्स पहले इनसे परचेज किया था और जो ग्लिटर उनकी तो पैकेजिंग अलग टाइप की होती थी और वो वाले ग्लिटर मैं अभी भी यूज कर रही हूँ. सेम क्वालिटी है, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं हुए हैं. आई एम जस्ट गोना शो यू गाइस. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. मैं अभी लेके आती हूँ, वो मेरे ड्रॉर में पड़े हैं. सो दिस इज द शेड कैपेचिनो और मेरे पास 4 शेड्स मैंने तब ऑर्डर किए थे इनसे. इसकी एक लिड भी थी, वो मैंने घुमा दी है, तो प्लीज एक्सक्यूज दैट. पहले ये ऐसे आते थे. एंड दिस इज द प्रोडक्ट एंड यू कैन सी अभी तक ड्राई आउट भी नहीं हुआ है. एंड दिस इज द प्रोडक्ट. यू कैन सी ये ड्राई आउट भी नहीं हुआ है एंड इट्स स्टिल गुड. मैंने ये 3 साल पहले आई गेस खरीदे थे एंड अभी भी बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई होते हैं. सो द क्वालिटी इज अमेजिंग फॉर श्योर. तो अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो एक्चुअली बहुत अफोर्डेबल है. इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अच्छी देते हैं विद क्वालिटी. ऑल्सो ये हैसल फ्री है. आपको कोई ग्लिटर ग्लू की रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट लो एंड अप्लाई कर लो लाइक अ नॉर्मल आई शैडो एंड यू गुड टू गो. प्लस ऑल्सो द गुड थिंग इज कि इसके जो ग्लिटर पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही फाइन है. नाउ अच्छी क्वालिटी के आई शैडो की यही पहचान होती है कि उनके जो ग्लिटर्स होते हैं वो बहुत फाइन होने चाहिए. अदरवाइज वो आपकी आईलिड्स के ऊपर छोटे छोटे माइन्यूट से स्क्रैचेस भी दे सकते हैं. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा प्रोडक्ट यूज करो जो आपको बिल्कुल भी इरिटेट ना करे आपकी आईलिड्स को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ ही साथ ये बहुत देर तक स्टे भी करते हैं. मैंने ये अपने भाई की शादी पे अपनी आईलिड्स के ऊपर वियर किए थे एंड एक्चुअली ये थ्रू आउट द नाइट फेरों के टाइम तक ये रहे थे, घर आने तक भी. तो एक्चुअली कैन टेल कि बहुत अच्छा स्टे भी करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, वेरी फाइन ग्लिटर है, बहुत चंकी ग्लिटर्स नहीं है जो कि आईलिड को इरिटेट कर सकते हैं. सो दिस इज माई रिव्यू. आई रियली लाइक देयर प्रोडक्ट्स एंड आई रियली लाइक दीज ग्लिटर्स एज वेल. सो दैट्स इट फॉर द रिव्यू पार्ट. नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द स्वॉचेस एंड जो इनका इंस्टाग्राम का हैंडल और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट. एंड नाउ लेट्स क्विकली सी द स्वॉचेस.
create a beautiful सा eye makeup with these glitters, and this boon color is really calling my name. ये बहुत ही pretty pink color है which has this green particles जो कि बहुत ही gorgeous लग रहे हैं. I'm really excited to use it on my eyelids. So now let's quickly create a eye makeup with this.